Good morning, team. ACC Ambuja, which is called as Adani Cement. The Adani Cement has unveiled GeoClean, its waste management arm, to build circularity and conserve natural resources. GeoClean targets to increase the thermal substitution rate to 30% from current 6%. It is very positive for ACC Ambuja. But it will take few years time for this to be achieved. But we are positive on cement stock ahead of our budget, which is going to be a full-fledged budget before general election. So ACC, Ambuja, Ultratech, Shree Cement are our topics. NTPC has declared commercial operation of 150 megawatt and 90 megawatt Devakot solar PV project in Jaisalmer, Rajasthan. So, standalone 58,041 megawatt is what they have standalone NTPC. As a group, they have 70,565.27 megawatt is the power they have. NTPC is the second largest power company in the world. So I think for a long-term investor, NTPC is one stock which should be there in the portfolio, as we feel demand for power and the power prices have also to be risen. So that will benefit NTPC, Tata Power, NHPC. Now NHPC, I feel in next 3 to 4 years, they will double. Their capacity is also doubling in next 3 years. So this is one stock to watch out for. Paytm announced the buyback for an amount not exceeding 850 crores and price below 810 rupees. And this is an open market buying. So we don't need to tender our shares. So this is arbitrary. Whenever they want, they can go and buy, and they will have 12 months of window. And it is not compulsory that they have to buy full 850 crores. If the price is below 810, 50% of the capital, that is compulsory to be bought, which is 425 crores. This is very negative for Paytm. So the stock has rallied due to the buyback thing. I think one has to be very careful there. Government has given few data in the Rajya Sabha. One is the finance minister has given this. The total commercial banks, scheduled commercial banks, the total write-off in last 5 years has been 10 lakh crores around in the last 5 years. And the total recovery in last 5 years is 6,59,596 crores. And whatever was bad in the last 5 years, that is out of 10,09,000 crores, they have collected 1,32,036 crores. That is 13% has been collected. This is the data finance minister has given in the parliament. And one more data was also discussed in the parliament, Rajya Sabha actually. Loans worth 1,74,966 crores were written off by scheduled commercial bank in FY22, and total recovery in FY22 was 33,534 crores. And this is a RBI data which Minister of Finance, Minister of State in Finance replied to Rajya Sabha. So I think the collection metrics have started to improve. We are very positive on banks, and Bank of Baroda, they are going to sell some stake, but leaving that alone, we are very positive on PSU banks. India and UK look to fast track free trade agreement negotiation. The 6th round is happening in New Delhi after a gap of 4 months. IFB Industries has received approval from Board of Directors for investment up to 97 crores. It will be a equity issuance for IFB refrigeration.
It is a promoter group company where IFB Industries will invest. It is in a build-up state, so it is not an operational unit. PFC, REC, SJVN, and Damodara Valley will buy Lanco asset in Chhattisgarh in central India for $365 million or 3,020 crores. This is what Business Standard has reported. And total power capacity is 1,980 megawatt of power unit, which is standard, which is not operational. So if they revive, that is going to be very positive. Yes Bank, Carley and Advent have picked up 9.99% stake in the bank. So the equity will be diluted. So they will get an amount of 8,896 crores with full conversion of warrant into equity. Current equity capital of Yes Bank is 5,011 crores. And if there is a dilution of almost 10%, then it will become 5,500 crores. So that means more equity dilution is happening. So this is something we need to watch out for. As market has started to move up, we expect market to move higher, make a all-time high. We like budget related stock which is connected with railways, defense. Bharat Forge is something which has started, which made all-time high yesterday. Banks is something we like. So I think we need to be in sectors and stocks which will perform. Even in IT, there are indications that India might get 160 billion of order. That means IT stock also will start to perform from here. With that, over to you, Brijesh. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम एक कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। HDFC से, HDFC को अप्रूवल मिला है BSE और NSE से। ये जो उनका नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो HDFC लिमिटेड से इशू हुआ था वो मर्ज करने के लिए, तो इसका सैंक्शन जो होगा वो NCLT से अप्रूवल होने के बाद होगा। बट ये जो न्यूज़ है जो अप्रूवल का, ये पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा। हमारा HDFC बैंक पे 1860 का टारगेट व्यू है और HDFC लिमिटेड पे 2950। ये पॉजिटिव न्यूज़ हो सकते हैं। ये एक बीच में हर्डल था, ये हर्डल भी अगर इसका अप्रूवल क्लियर होता है NCLT से, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ एडिशन होगा HDFC लिमिटेड के लिए। तो हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा इस पे काउंटर के ऊपर। टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि वो उनके जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें वो 2% का वो प्राइस इंक्रीज करेंगे अक्रॉस द सभी कमर्शियल व्हीकल में जनवरी 2023 से। ये मेनली वो कर रहे हैं क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट जो काफ़ी बढ़े पिछले कुछ दिनों में, इसको स्टेबल करने के लिए वो उनके प्राइसेस को 2% इंक्रीज करने वाले हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा टाटा मोटर्स के लिए। अगला है टीवीएस मोटर के ऊपर। तो कंपनी प्लान कर रही है कि वो उनके जो टू व्हीलर्स की जो है वो टर्की में वो लॉन्च करेंगे यूरो 5 एमिशन नॉर्म्स के जो कंप्लायंस है वो व्हीकल्स। इसमें जो व्हीकल्स जो वो करेंगे वो है जुपिटर नाइट्रो, रेस राइडर और अपाची ATR 200। ये वो करेंगे टर्की में। लेकिन ये बेसिकली टर्की गवर्नमेंट कर रही है सो दैट वहाँ के जो एनवायरनमेंट और जो बाकी के वेलफेयर ऑफ द जो वहाँ पे जो सिटीजन है उनके लिए करे। और ये चीज करने के लिए उनको यूरो 5 नॉर्म्स के जो अप्रूव्ड जो सेगमेंट है उसी में वो कर सकते हैं। तो कंपनी तो टीवीएस मोटर उनके ये जो सेगमेंट है वो वहाँ पे लॉन्च करने के लिए देख रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज होगा टीवीएस मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट ने ये बताया कि वो 1.9 मेगा टन MTP है ग्रीनफील्ड ग्राइंडिंग जो है वो कमीशन करेगी पाली सीमेंट वर्क राजस्थान में। तो कंपनी का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है राजस्थान में। अभी ये कमीशन के बाद उसका जो कैपेसिटी है वो 16.25 MTPA बन जाएगा। तो ये जो है वो 5 अलग अलग प्लांट है जो लोकेशंस है वो स्टेट के अंदर। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज होगा इसके लिए। हमारा ये स्टॉक के ऊपर बाय व्यू है, टारगेट है 7455।
तो इसके बाद है वेदांता के ऊपर। वेदांता ने बताया कि उन्होंने जापानीज कंपनी के साथ 30 टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को 30 जापानीज टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ टाई अप किया। ये बेसिकली ये सेमीकंडक्टर्स और ग्लास डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को ये डेवलप करने के लिए। तो ये जो हुआ इन्होंने जो ये साइन किया है, ये बेसिकली जो वो जो ये बिजनेस पार्टनर समिट हुआ था 2022 लास्ट वीक में टोक्यो जापान में, ये वहां पे किया था। और ये जो हुआ था 200 से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया था और इसमें 100 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज ने पार्ट लिया था। तो ये पॉजिटिव न्यूज हो सकता है वेदांता के लिए। अगला है पिरामल एंटरप्राइजेस के ऊपर। पिरामल एंटरप्राइजेस ने ट्यूसडे को बताया कि जो कंपनी की ओनली सब्सिडरी जो है पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, वो 100% स्टेक लेगी पीआरएल अगस्त्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो इसका जो है 90 करोड़ पे लेगी। ये जो पीआरएल अगस्त्या जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट में देखती है। और इनका मेजर ऑब्जेक्टिव ये लेने लेने के लिए, क्योंकि ये उनको ऑफिस स्पेस एक्वायर करना है, तो उसके लिए वो इसमें स्टेक लेना चाहती है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे एक अपडेट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्यूसडे बताया कि उनको जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है जो नैनीताल बैंक एनबीएल जिसे बोला जाता है, उनका जो स्टेक है 98.5% का स्टेक है, ये वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और इसका बोर्ड ने अप्रूवल दिया हुआ है। सो ये स्लाइटली इससे ज्यादातर कुछ नहीं फर्क करेगा, बट ये न्यूज ध्यान में रखने जैसा है। एक्सिस बैंक ने बताया कि उनका बोर्ड ने भी अप्रूव किया 12,000 नॉन कन्वर्टेबल बेस 3 कंप्लायंस के जो 2 टायर के जो बॉन्ड्स है, जो जिसका वैल्यू 1 करोड़ ईच है, उसका अप्रूवल आया। ये बेसिकली ये जो 12,000 करोड़ के जो बॉन्ड है, ये 7.8% के पर एनम के रेट से ये पेएबल होगा। सो इससे वो फंड रेज कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज होगा एक्सिस बैंक के लिए। इसके बाद एनटीपीसी के ऊपर है। तो एनटीपीसी का जो प्रेजेंस है राजस्थान में, जो सेकंड लार्जेस्ट पावर बैंक है, इसमें इसका जो अपडेट्स है उसके हिसाब से हमें लगता है कि एनटीपीसी लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है। अगर एनटीपीसी पावर स्टॉक्स आप कोई भी देखिए, एनटीपीसी, टाटा पावर, ये आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। प्लस एनएचपीसी भी है, जिसमें हमें लगता है कि 3 to 4 years में डबल हो जाएगा स्टॉक। तो हमें लगता है कि इस पे आपको इन्वेस्टर रहना चाहिए ये काउंटर में। हाँ, पेटीएम का जो बायबैक का जो न्यूज था, उसमें जो रैली आई थी, तो हमें लगता है कि वो एक अभी जो करंट सिनारियो में एक नेगेटिव न्यूज महसूस होता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। तो ये हमें वॉच करना चाहिए। गवर्नमेंट का एक डेटा आया था राज्यसभा में, फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री से आया है, जहाँ पे उन्होंने शेड्यूल कमर्शियल बैंक के ऊपर बताया कि उन्होंने काफी सारे 10,09,000 करोड़ तक की जो लोन बुक से राइट ऑफ किए हुए, और जो रिकवरी जो देखी थी क्लोज टू 13% के करीब कलेक्शन है, तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं कलेक्शंस के तरफ। तो आगे चलते हुए हमें लगता है कि जिस हिसाब से उन लोगों का जो कलेक्शन मैट्रिक्स जो इम्प्रूव है, तो पीएसयू बैंक्स में स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा और जितने भी हमारे पीएसयू बैंक के जो लिस्ट है, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसका जो परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगा। तो हम इसको बाय रेटिंग लेके चल रहे हैं। अगला है यूके और इंडिया के ऊपर, जो उनके जो फास्ट ट्रैक अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में काफी डिस्कशंस चल रहे हैं। तो आगे चलते हुए दोनों के रिलेशंस काफी पॉजिटिव रहेंगे, तो ये एक ग्लोबली एक पॉजिटिव न्यूज रहेगा। अब जिस हिसाब से मार्केट जो बजट के चलते बजट तक हमें लगता है कि मार्केट का जो मूड है, सेंटीमेंट है, पॉजिटिव रहेगा। जो स्टॉक्स ऊपर ऊपर चल रहे हैं, जो स्टॉक्स परफॉर्म करे, उसी में मोमेंटम रहेगा। हमें वही स्टॉक्स में हमारे ट्रेड रखते हैं। ऑलरेडी जो रेलवे डिफेंस के जो स्टॉक्स जो चढ़े हैं, उसमें लगता है, हमें लगता है कि अगर डिक्लाइंस मिलता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। भारत फूल जैसे स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमें लगता है कि इसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्लस जो सेक्टर्स परफॉर्म करे उसी पे हम ध्यान दें। तो बजट तक हमें लगता है कि नया तेजी, नया कंटिन्यू मेजर कोई डिक्लाइन नहीं होगा। छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बट डायरेक्शनली हमको लगता है कि बड़ा तेजी की तरफ हम
हमें देखना चाहिए। और इवन आईटी में भी जो हमारा जो इनिशियली जो नेगेटिव व्यू था वो हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से आईटी में हमें जो ऑर्डर बुक्स मिल रहे हैं ग्लोबली, तो वो थोड़ा सा आईटी के लिए पॉजिटिव रह सकता है। तो आईटी में भी फिलहाल करंट सिनारियो में हम पॉजिटिव व्यू लेके चल रहा है। Technical there is a good. In yesterday's session, if we see that it was a continuation of previous session, only Nifty managed to hold 18,500 levels and it went over to 18,600 levels. And as you traded at 18,600 being a crucial zone and Nifty capturing that level was very good. And in today's session also, we are saying there is a 100-point gap up and Nifty moving towards 18,700 and 18,800 levels. Now the base has come to 18,400 levels. Until 18,400 is reached or the previous low of 18,356 is taken out, we should avoid taking shorts over here and we should be buying as a buy as a strategy only. And if 18,400 is breached, then only we will see a lower levels from here on. And on the sectoral front, if we see that PSU banks and IT and pharma and private banks were the leaders, while the real estate, realty index and consumer durables closed in the red. On the Bank Nifty front, of course, the Bank Nifty also continued to make a new high at 44, just shy of 44,000 levels. On the sectoral front of in the bank sector, if you see, then Deveris 2-1 was an advanced decline ratio with the AU Bank only on the losing side. Technically, Bank Nifty is moving higher on a slower basis, and Nifty is also catching up with the Bank Nifty levels. So we will now witness sooner to cross 19,000 levels in the recent times. Until this 43,000 in the Bank Nifty is not taken away, then there is no profit booking or something negative moment can be encountered with this. On the derivatives front, if we see, then we saw a short covering it to the tune of 1%, that is reduction of 0.13 million shares. And then the PCR stayed at PCR has risen from 0.91 to 1.05 levels, which is above 1, which is also encouraging for the index. For the calls option, on the option front, if we see that 18,600 would be a hurdle for the time being and 19,000 would be the next hurdle. And on the put side, if we see there is again 18,600. So 18,600 is becoming a straddle. So it would be a tug of war on this zone. So Nifty capturing today above 100 points. So we should see a quick winding and short covering moves from here on. For the Bank Nifty, if we see, then Bank Nifty also saw a long better return of 6%, that is addition of 0.2 million shares. And the PCR has also risen from 1.15 to 1.4. So PCR is slightly moving towards the overbought zone. So let's see how the Bank Nifty phases out from here on. And on the call option front, if we see, then 43,500 is acting as a good support and 44,000 would act as a hurdle over here. On the stock specific, if you see, there were 3 long builders in UBL, Darknet Power, and Honeywell Automation, while the shorts were built up in Metropolis, Alchem, and Crompton Labs. On the FIs front, if you see in the cash market, they bought to the tune of 620 crores, while DI was also biased to the tune of 37 crores. And in the futures also, they have increased their long position by 5,500 contracts. So they are net long by 38,000 contracts. So now long short ratio is maintained at 61%. The stocks can be kept on radar are Chandal Fertilizers and Tata Communications. These stocks are looking good for a short-term moves and can be kept on radar. So that's it from mine. I'll hand over to Bhavisha for more updates. Thank you. Hi, good morning, team. So starting with the update on Ultratech. So Ultratech has commissioned a greenfield plant of 1.9 MTPA at Pali Cement Works, Rajasthan. The company has expanded its presence in Rajasthan and now has 16 million ton of capacity spread over 5 locations in Rajasthan. So this is positive for the stock, and we maintain our buy rating with a target price of 7,455. Secondly, Tata Motors said that it will raise the prices of commercial vehicles by 2% because of rising prices of input pressures. So while the price increase will vary based on individual model and variant, it will be applicable across the entire range of commercial vehicles. So positive for Tata Motors. Then the TVS Motors. So TVS Motors had said that they will launch Euro 5 emission norms compliant two-wheeler in Turkey. So company said that it will introduce products like Jupiter, Race Edition, Raider, etc. in the market. So in consideration of environment protection and taking care of well-being of the people of Turkey, the Turkey government had regulated adherence to Euro 5 norms.
And then lastly on HDFC, so HDFC has received HDFC Limited has received approval from BSE and NSE for transfer of non-convertible debentures issued by HDFC Bank by HDFC Limited to HDFC Bank, subject to sanctioning of the merger by NCLT. So this is very positive because this is like one more hurdle for HDFC Bank or HDFC Limited, both of them, and we have a buy on both these stocks. So that's it from me. Over to you, retail team. Thank you, sir. Good morning, everyone. Few updates from my side. Vedanta yesterday said that it has signed a pact of 30 Japanese technology companies to develop an Indian semiconductor and glass display manufacturing ecosystem. So this pact was signed at Vedanta Administrate Business Partners Summit 2022 held at last week in Tokyo, Japan. This was attended by more than 2 delegates from over 100 global companies. The next update on Piramal Enterprises, PEL announced that the company's wholly owned subsidiary Piramal Capital and Housing Finance Limited has acquired 100% stake in PRL Agastya Private Limited for cash consideration of 90 crore. PRL Agastya is engaged in the business of construction and development of real estate projects. So the objective of this acquisition is to acquire office space. The next update on Bayer Crop Science. The agrochemical company Bayer Crop Science temporarily discontinued operation at crop protection formulation plant at Himmatnagar in Gujarat with effect from December 12. So this is after the direction from the Gujarat Pollution Control Board. The next update on Axis Bank. The private sector lender Axis Bank received board's approval for the allotment of 12,000 non-convertible Big Three complement tier 2 bonds for the face value of rupees 1 crore each. Total fund raised will be around 12,000 crores at 207.8% annual payable annually. Then last update on Bank of Baroda. Bank of Baroda yesterday said it is company plans to sell its majority stake in Nainital Bank. The board of directors of the bank has approved the divestment of its majority shareholding in Nainital Bank Limited and authorized an issuance of advertisement and inviting expression of interest through the PMI of interest parties, and the Bank of Baroda is currently holds 98.57% of the total equity share capital of Nainital Bank Limited. So that's it from mine. Now I will hand over to Prabhakar sir. Over to you, sir.